नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, आपका जो है हमारी वीएम क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हमारी जो है आईएएस मेंस की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, हम जो है अपने पथ पर अग्रसर रहते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास, इसके ऊपर जो है हम अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या बोल रहा है? अ पाइप हैविंग अ लेंथ ऑफ अ पाइप हैविंग अ लेंथ ऑफ 6 किलोमीटर, देख रहे हो भाई साहब, 6 किलोमीटर एंड diameter diameter 0.7 meter connects to reservoir A and B. The difference the difference between their water level is their water level is 30 meter. Halfway along the pipe, halfway along the pipe, there is a branch. There is a branch which water can which water can be supplied to a can be supplied to a third reservoir. Third reservoir taking F is equal to 0.024. Determine the rate of flow. Determine the rate of flow of reservoir P when condition है आपका no water is no water is discharged discharge to reservoir C. Or next one, the awaited of water discharge to reservoir C is 0.15 meter cube per second. Neglect the minor losses. चलिए इसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी ओर से। फर्स्ट कंडीशन में आपका रिजर्वायर है, तो उसकी झलकियां दे देते हैं भैया। ये रहा
ज्वाइंट हो गया। ठीक है, आपका पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ से टिप कर रहा है सेकंड वाले सेगमेंट में, यहाँ तक पानी भरा। ये पॉइंट बी है, डिफरेंस है हाइट का कितना, 30। इस पाइप की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। देख रहे हो, 6 किलोमीटर इतनी सी जगह में। डिस्चार्ज है क्यू। ओके, चलिए, मेजर लॉसेस का हमको फार्मूला पता है, आरसी का फार्मूला पता है, एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 GD। एच एफ इज इक्वल टू 30, फ्रिक्शन फैक्टर 0.024 इंटू 6 इंटू 10³ इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 into 0.7. Here the velocity is to be calculated 1.692 meter per second, and the discharge AV is pi by 4 d square times V। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा डिस्चार्ज 0.65 मीटर क्यूब पर सेकेंड। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है हम आगे बढ़ेंगे। बी पार्ट के लिए, तो जहाँ पे जो है टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम द रिजर्वायर ए एंड द डिस्चार्ज एमिंग इनटू द रिजर्वायर बी इज इक्वल टू क्यू माइनस 0.15। कोई बात नहीं, रिजर्वायर ही तो है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बड़े आसानी से। लेट क्यू बी द टोटल डिस्चार्ज है।
कर लेते हैं हम। पानी नहीं रहा है साथ। ठीक है, जैसे तैसे बंद तो गया। ये पॉइंट ए है। डिस्टेंस है 30 मीटर का up to a point B. Discharge Q is to be flowing up to this segment. The distance is 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर, जो पाइप का डिस्टेंस पॉइंट सी है, यहाँ तक भरा हुआ है पानी। ठीक है, ये सेकंड केस के हिसाब से डिस्चार्ज 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
HF is equal to, we have FL1 4Q upon pi d square, the whole square, division over the 2 dd1 plus FL square times 4 times of Q minus 0.15 upon pi d square का whole square upon g d2. So on this point we have the value of HF and the remaining one 0.0243 into 10 cube divided by 2 into 9.1 pi by 4 square 0.7 square into q square plus q minus 0.15. So here becomes 0.713 meter per second. Now the flow through reservoir equal to 0.715 minus 0.15 0.563 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये अपने को अरेंजमेंट मिल जाएगा। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूविंग डाउन करेंगे। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन, वाटर is pumped through is pumped through a 600 millimeter diameter pipe with a head loss of 20 meter, head loss of 0 meter. It is intended to reduce the power consumption by laying another parallel parallel pipe of appropriate diameter laid by the side of the existing pipeline with the same overall length and the same friction factor and same friction factor by reducing the head loss by reducing the head loss 10 meter, but still
delivering the same delivering the same discharge jointly through both pipes through both pipes. What should what should be the diameter of this be the diameter of this additional pipe. चलो कन्वीनियंस के लिए आपके एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट से पढ़ दिया जाएगा. Water is pumped through a 600 millimeter diameter pipe with a head loss of 20 meter. It is intended to reduce the power consumption by laying another parallel pipe of appropriate diameter laid by the side of the existing pipeline with the same overall length and the same friction factor by reducing the head loss to 10 meter but still delivering the same discharge jointly through both the pipes. What should be the diameter of the additional pipe? ये है हमारा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन. चलिए इसे सॉल्व इट डाउन करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी ओर से और हम कर भी लेंगे, आशावादी रहेंगे. तो ये आपका अरेंजमेंट बना दिया जाए. सर्वप्रथम फर्स्ट वन हियर is down. ठीक है, ये आपका पाइप वन का यहाँ से चालू होता है. फ्रेंड्स आपका हाइट का 20 मीटर का आता है. देन सेकेंड पार्ट में यहाँ तक आता है लेवल. एच एल इज इक्वल टू 20 मीटर 600 millimeter. Here we have the जो moving on up to the length by जो कैलकुलेशन का पार्ट रहेंगी इसे अभी एल नाम दे दो. यहाँ पे एच एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 20 मीटर. हमारे पास जो है डार्सी की इक्वेशन होती है, डार्सी पेबैक इक्वेशन क्या होता है, हेड लॉस फ्रिक्शन हेड लॉस एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 डी. So here we have 8 FL Q square upon pi square GD 5. Alright, so put the value over here. FL Q square upon 12.1.6 raised to power 5. Now total discharge क्या होगा साथियों, Q is equal to Q1 plus Q2 combined one. So let's move ahead with the case. Head is reduced, head is reduced to 10 meter and both the pipes have same length L and the same friction factor F. So here further we have to move ahead. 10 is equal to FL Q1 square division over the 12.1 0.6 raised to power 5.
Further, we move ahead. Let's go through the point FL Q square Q2 square upon 12.1 into T1 raised to power 5. हमारे पास कंडीशन है Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन √2. तो यहाँ पे हो जाएगा 0.707 times Q discharge. Now the value over the Q is Q minus Q1, which is 0.293 times of Q. From the equations, if we put the value over here, so the value is to be Q1 square upon 0.6 raised to power 5 is equal to Q2 square upon T1 raised to power 5. So the ratio is to be Q1 upon Q2 0.6 divided by D1 raised to power of 5 by 2. So holy cow, the value over the D1 is to be 0.422 meter. 422 meter. That's the easy peasy way. एक बार जो है ना आपको जो है सेकंड कंडीशन का डायग्राम बना देते हैं. चलो, ये रहा फ्री वाटर सरफेस लेवल. यहाँ से डिस्टेंस है 10 मीटर. देन आफ्टर दैट मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड वाले का लेवल आता है. देन ये जो ड्रमर है उसका जो है आपके डिस्चार्जेस जाएंगे Q2 on this pathway. Q2 here, distance apart 600 millimeter is to be the T1 over here, right? And the rest is the calculation is to be the same. Okay, आपको जो है यहीं तक रखते हैं सेशन हमारा. एक काम करना है, क्या EM क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करना है. और जीवन में साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए. यही ईश्वर से हमारी कामना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.